Hello students, in today's lecture we're going to learn how to balance redox reactions using oxidation number method. So before we start, I want everyone who's watching the video to please like, subscribe and leave your comments behind in case if you have any doubts or any questions or if you want us to teach any particular topic. Let's start. So, in balancing redox reaction, we have two types where you're balancing redox reaction in acidic medium using the oxidation number method or in basic medium. Students, एक और method है which is ion-electron method. I will upload a different video for that. But ये method is easier and a faster way to do it. But since we're doing it for the first time, हम सारे methods, हर सारे steps को अच्छे से समझ के करेंगे. Now, let's first understand कि हमें एक reaction दिया है. What we need to first do is we need to identify the atoms undergoing oxidation and reduction by assigning them the oxidation number. तो यहाँ पे chromium पे students oxidation number is +7. यहाँ पे sulfur पे the oxidation number is +4. If I look at chromium, यहाँ पे chromium is in ionic state +3, तो उसका oxidation state is already यहाँ पे given which is +3. And the oxidation number on sulfur over here is +6. For students who do not really know कि ये number कहाँ से आए, please watch the previous video where we have how to find the oxidation number. हमने पूरे questions किए हैं. So the first step is हमने सारे elements के सारे atoms के oxidation number लिख दिए. We have identified the atoms which have or with their oxidation numbers क्या है. Second step, we identify the elements which have atoms which have undergone oxidation or reduction. अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें. So chromium went from +7 to +3. Since chromium went from +7 to +3 students, तो हम वो बोलेंगे chromium का हुआ है reduction. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं chromium +7 to +3. So यहाँ पे students reduction. And sulfur has gone from +4 to +6. So sulfur का is oxidation. That's step number 1. Now what we do students in step number 2 is we balance the atoms who have undergone oxidation reduction, except do not balance hydrogen oxygen. हम hydrogen and oxygen को सबसे last में balance करेंगे. So यहाँ पे आप देखिए chromium number of atoms are 2, but here the number of chromium here is only 1. तो हम we will multiply that chromium with 2. Similarly sulfur अगर हम देखें left में एक ही sulfur है, right में we have one sulfur. तो sulfur तो balanced है, but यहाँ पे there are 2 atoms of chromium. So here we will multiply by the number 2. I repeat, hydrogen oxygen end में balance करते हैं. Now students, सबसे important आता है next step which is called as balancing charge. Let's understand balancing charge का मतलब क्या है. Chromium went from +7 to +3, which means chromium gained 3 electrons. Chromium gained 3 electrons. So each atom of chromium has gained 3 electrons, students. अब यहाँ पे हम देखें तो atoms तो chromium के there are 2 atoms on the left and 2 यहाँ पे chromium है on the right. So in total 6 electrons were gained during reduction by chromium. तो अगर 6 electrons gain होंगे students, हमें ये ध्यान रखना है. Why are we balancing charge? Because 6 electrons lost भी होने चाहिए. The number of electrons reduced during reduction, उतना ही number of electrons during oxidation. And if I look at sulfur, तो sulfur तो +4 से +6 गया, तो sulfur lost 2 electrons. And left में भी एक ही sulfur atom है, right में भी एक ही sulfur atom है. So in total 2 electrons were lost. अब how is that possible कि 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 ही लूज कैसे किए? लूज भी हमें 6 होने चाहिए. So that is what we mean by balanced charge. Simple trick है students.
क्रोमियम ने 6 गेन किए, सल्फर ने 2 किए, ये 2 और 1 आई कैन डिवाइड दिस, ये 2 1s are 2 3s are, तो जहां पे भी क्रोमियम है यू विल मल्टीप्लाई दैट बाय 1, wherever there is sulfur you will multiply that by 3. तो नेक्स्ट अभी इक्वेशन हमें क्या मिलेंगी स्टूडेंट्स, आई रिपीट, ये इक्वेशन पे जहां पे भी क्रोमियम है इट रिमेन्स एज इट इज, तो Cr2O7 2 minus, but sulfur we are going to multiply sulfur with 3, so that becomes 3SO3 2 minus gives chromium as it is, and sulfur will multiply again by 3, so 3SO4 2 minus. This is, students, we have balanced charge. But अब next step आता है very important, step 4, where we balance oxygen and hydrogen. And students, in this method we are using acidic medium balancing. So now we are going to balance in acidic medium, which means the final equation should contain H+. So देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं. In this equation, students, we will count the number of oxygens. So students, अगर on the left hand side अगर हम देखें, L left R right, तो left में if I see 7 oxygen atoms, 3 3s are 9, 9 plus 7, there are 16 oxygen atoms on the left. But on the right hand side, 3 4s are, there are 12 oxygen atoms. So the side which has lesser number, the side which is deficient in oxygen, हम उतने ऑक्सीजन ऐड करेंगे in the form of H2O. So यहाँ पे 4 ऑक्सीजन कम थे, so हमने ऐड कर दिए 4 H2O, ये ऑक्सीजन हो गई बैलेंस. But now we have to balance hydrogen. How many hydrogens are now there on the right hand side? 4 2s are 8. तो 8 hydrogen balance करने के लिए we will add 8H plus. And this, students, is the final balanced equation. I hope students सबको समझ में आया ये. Let's take one more example, but this time we are going to balance redox reaction in basic medium. Let's understand what's the difference, students, this time when you're trying to balance the reaction in basic medium. Now this time हम steps थोड़ा जल्दी करेंगे, because first step हमें पता है, we will quickly write the oxidation number on the atom. So this is +7 over here, manganese. ब्रोमीन देखो -1 हमें ऑलरेडी दिख रहा है. यहाँ पे दिस मैंगनीज इज +4 एंड यहाँ पे ब्रोमीन पीपल इज +5. स्टेप 2 में मैं चेक करूंगा किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है. सो Mn +7 से +4, स्टूडेंट्स, दैट इज रिडक्शन. 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं. ब्रोमीन -1 to +5, स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑक्सीडेशन. Now students, in the next step we will check कि जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है आर दे बैलेंस्ड. हाइड्रोजन ऑक्सीजन, स्टूडेंट्स, लास्ट में बैलेंस करेंगे. Mn एक एटम, यहाँ पे भी Mn एक एटम बैलेंस है. Br एक एटम, Br एक एटम बैलेंस है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. We move towards the step 3, which is the most important step, students, where we are going to balance charge. Now students, चार्ज बैलेंसिंग में हम कैसे देखते हैं. मैंगनीज गेन्ड, स्टूडेंट्स, मैंगनीज गेन्ड +7 से +4, मतलब मैंगनीज गेन्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स. एंड ब्रोमीन लॉस्ट, स्टूडेंट्स, ब्रोमीन वेंट फ्रॉम -1 to +5, so bromine lost 6 electrons. If we can divide this, if we can, तो हम उसको करते हैं. 3 1s are 3 2s are. So जहाँ पे भी ब्रोमीन है we are going to multiply that with 1, and जहाँ पे भी मैंगनीज है we will multiply that with 2. So students, यहाँ पे मैंगनीज, so 2
MnO4 minus plus bromine as it is रहने वाला है, so Br minus, this gives us 2MnO2 plus BrO3 माइनस। ये हो गया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया है चार्ज। बट इसके बाद का स्टेप इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट वेयर वी नीड टू बैलेंस। स्टेप 4 में हम बैलेंस करेंगे बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम। स्टूडेंट्स बेसिक मीडियम में लेट्स अंडरस्टैंड what is the difference। basic medium में हमें OH minus दिखना चाहिए students। so what we do here is first step remains the same। first step में we will try to find the number of oxygen atoms on the left and on the right hand side। तो लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन से 2 4s are 8। राइट में स्टूडेंट्स 2 2s are 4, 4 plus 3 7। Now students, there are two ways to balancing basic medium। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, आपको जो सिंपल लगे आप वो यूज कर सकते हैं। So right में there are 7 hydrogens। So what I will do is I need one oxygen, right में there are 7 oxygens, so I will add 1 H2O। तो राइट में मैंने स्टूडेंट्स H2O ऐड कर दिया। अब ध्यान से यहाँ पे H2 ऐड किया, यहाँ पे 2 H आ गए, सो आई विल राइट 2H प्लस। वी आर नॉट डन स्टूडेंट्स, H प्लस ऐड किया, बट ये तो बेसिक मीडियम है, वी शुड सी OH माइनस। सो व्हाट वी डू नेक्स्ट, 2 H प्लस को नलिफाई करने के लिए हम ऐड करेंगे 2 OH माइनस। So if I add 2 OH minus on the left, I need to add 2 OH minus on the right। यहाँ पे भी OH minus ऐड किया, यहाँ पे भी OH minus ऐड किया, 2H plus plus 2 OH minus now becomes 2H2O। So students, now if we carefully observe the equation looks something like this। 2MnO4 minus plus Br minus plus 2H2O gives 2MnO2 plus BrO3 minus plus H2O plus 2OH minus। अब यहाँ पे भी H2O है, यहाँ पे भी H2O है, I can get rid of 1 H2O। यहाँ पे एक H2O भी कट हो गया। So मेरा फाइनल इक्वेशन क्या मिला स्टूडेंट्स? द फाइनल इक्वेशन लुक्स लाइक, ये मिल गया मुझे मेरा फाइनल इक्वेशन, 2MnO4 plus Br minus plus H2O plus 2MnO2 BrO3 and 2OH minus। This is the first way students that you want to balance in basic medium। अब students एक और technique से we can balance in basic medium। Let's understand the second technique। Second technique is also more or less the same। Technique number 2। In technique number 2 students, what we do is, ये जो same equation है, let me first copy this। फिर से ये 2 आ गया, चलो। So what we do is again we count the number of oxygens। Right में students there are 7 oxygens, left में students there are 8 oxygens। Let's understand। So right में एक ऑक्सीजन कम है, I add 1 OH minus। So जितने OH minus ऐड किए, we add the same number of H2O on the opposite side। I repeat, there was 1 oxygen less on the right, so I added 1 OH minus। I will add equal H2O on the other side। I added 1 H2O on the left or on the other side। I will again add equal number of OH minus on the other side। OH minus plus OH minus, now there are 2 OH minus and the reaction is balanced। यहाँ पे भी students, do you see we got the same equation।
So students, this is the way we balance redox reaction by using the oxidation number method in acidic medium and in basic medium. If you have any doubts or any questions, please leave your comments behind. I request you all to please like the video, please subscribe to the channel, and if you have any doubts or any questions, JP's Academy is always there to help students. Thank you so much.